Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learn with Yogesh sir. You are watching class 11th chemistry chapter wise explanation series, and today in this video I will explain you chapter number 2, structure of atom. And as you know, this chapter is very lengthy, so I will explain the chapter in parts. So this is the first part of this video, so let's start. So atomic models. So in this chapter we will learn about different type of atomic model. So why were atomic models needed? हमें इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? तो after discovery of electron proton, scientists had to answer how are positive negative charge are arranged, how is an atom stable, how do atom behave chemically, how are molecule forms, and how do atom absorb or emit radiation. तो इन सब के आंसर जानने के लिए वी नीड एटॉमिक मॉडल, देयर स्ट्रक्चर, हाउ दे वर्क. So in 600 BCE, according to Maharishi Acharya Kanad, he purposed that matter is made of eternal, indestructible and spherical particle called परमाणु. यानी कि जो मैटर होता है वो एक ऐसे छोटे से छोटे तत्व से बना है जिसे हम परमाणु बोलते हैं. उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. और सेम काइंड की डेफिनेशन दी थी 1808 CE में जॉन डाल्टन ने. what did he say? He said matter consists of small indivisible building block called atom. So this is the detailed atomic model theory of Dalton. What are the postulates of Dalton atomic theory? First is made of tiny particle called atom. Atom of same element are identical mass and property, but atom of different elements are different. Atom cannot be created nor can be destroyed. Compounds are formed when atom of different elements combine in simple whole number ratio. In a chemical reaction, atom are only rearranged. They are not created, destroyed or changed into in other atom. So you can see here visual representation element like copper. This is atom of copper. They all are identical. ऐसा नहीं है कि एक छोटा एक बड़ा है या दिखने में अलग है, तो they will be same. Okay, like in case of compound, you know the water H2O, there is one atom of oxygen and two atom of hydrogen. तो water का जब भी आप एग्जांपल लोगे, चाहे water आप कहीं से भी लो, उसका जो कंपाउंड होगा मोलिकुलर स्ट्रक्चर वो H2O ही होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. अगर उसमें हाइड्रोजन की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की, तो वो वाटर नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा. जैसे कि H2O2 में हाइड्रोजन पर होता है, वो ना कि वाटर होता है. But there are some limitation of Dalton model. What are these limitation? First is atoms are not indivisible. It means we can divide atom further. Later discovery showed that atom have a subatomic particle, electron, proton and neutron. Atom of same elements are not always identical. जैसे कि उन्होंने कहा था कि सेम एटम के एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल होंगे प्रॉपर्टी में, बिहेवियर में, पर ऐसा नहीं होता. आइसोटोप के केस में जैसे यहाँ पे 3 आइसोटोप दिए हुए कार्बन के, C12, C13, C14, इन ये सेम एलिमेंट के हैं, बट दे आर डिफरेंट इन आइडेंटिटी, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. ओके, इट कुडंट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास. जैसे यहाँ देख सकते हैं आर्गन और कैल्शियम का मास सेम है. नो डाउट देयर एटॉमिक मास आर डिफरेंट, बट देयर एटॉमिक मास, नो डाउट देयर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, बट देयर एटॉमिक मास इज सेम. Isobars. It gave no idea about the structure और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अरेंजमेंट कैसी होती है, तो उसके बारे में कोई आइडिया यहाँ पे नहीं मिला था हमें. तो लेट्स स्मैश द इनडिविजिबल एटम. उसको हम तोड़ के देखते हैं व्हाट इज देयर इनसाइड इट. डॉल्टन का जो रूल था, डॉल्टन्स रूल हेल्ड स्ट्रॉन्ग अंटिल जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट विद कैथोड रेज ट्यूब. तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे ट्यूब के अंदर. उन्होंने क्या किया, ही अप्लाइड हाई वोल्टेज अक्रॉस ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ वैक्यूम. एन इनविजिबल रे ट्रेवल्ड फ्रॉम नेगेटिव कैथोड टू पॉजिटिव एनोड. एंड व्हेन अ मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड, द बीम बेंट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. तो इससे पता चलता है ये जो बीम यहाँ पे ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एज इट इज बेंडिंग टुवर्ड पॉजिटिव ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. सो इससे हमें पता चलता है दिस बीम हैज इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, सो इट मीन्स इट हैज सम पार्टिकल, इट इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल. अब एटम तो ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो व्हाट इज ट्रांसफरिंग देयर एंड व्हाट इज दिस पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज. सो लेट्स सी, ही गेव दिस पार्टिकल नेम इलेक्ट्रॉन. Atoms are not indivisible. They contain much smaller negatively charged subatomic particle. We call them electron. So electron was discovered by J.J. Thomson. The dilemma and the plum pudding model. So he gave us a atom model. And what was it? Atom are electrically neutral if they contain negative pieces. What balance the charge? So Thomson updated the atomic model by proposing a sphere of diffuse positive charge with a negative electron embedded inside it. तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज बॉल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है. आप और ये पॉजिटिव चार्ज बॉल जो है इन इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर रही है, यानी कि दोनों इक्वल है चार्ज के.
shooting alpha particle at the wall of gold. Ernest Rutherford wanted to test Thomson plum pudding model by firing heavily positively charged alpha particle at a sheet of gold foil just 1000 atom thick. तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल जो कि हेवली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उनको फायर किया थीन गोल्ड फॉइल शीट पर। तो देखते क्या हुआ। रदरफोर्ड रिमार्क्ड इट वाज लाइक फायरिंग एन आर्टिलरी shell at a tissue paper and having it bounce back at you. The expectation क्या होना चाहिए था, alpha particle should punch straight through the soft diffuse plum pudding with almost no deflection. सीधे चले जाने चाहिए थे, उनमें कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ 99.9% ऐसा हुआ है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट without any kind of deflection or diversion, but 1 in 20,000 violently रिकोचिटेड स्टेट बैक। तो उनमें से एक पार्टिकल 1 out of 20,000 केम बैक एग्जैक्टली एट 180 डिग्री। तो ऐसा कब होता है, देखो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव था। आपको पता है केमिस्ट्री फिजिक्स में कि अपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर एंड द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो एक पार्टिकल वापस आया था तो ऑब्वियसली इसको किसी ने रिपेल किया था, तो विच वाज दैट पार्टिकल, सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट एटम। और ये आप देख सकते हो कि बाकी सारी जगह जो है सीधे जा रहे हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां से वो वापस आ रहा है। तो मतलब ये एक बहुत ही छोटे से स्पेस में ऑक्यूपाई है। तो रदरफोर्ड ने जो है एक नया मॉडल दिया, द प्लैनेटरी मॉडल, एंड अकॉर्डिंग टू द हिम मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड दिस स्पेस इज टोटली एम्प्टी। ओके, एंड द न्यूक्लियस all positive charge and almost all mass is concentrated। so positive charge पूरा एटम के अंदर फैला नहीं हुआ, जैसा कि जे थॉमसन ने कहा था। ये जो है सेंटर में कंसंट्रेटेड है और डेंस कंसंट्रेटेड। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट द मैथ प्रॉब्लम, अ मिसिंग मास। अब हमें पता चल गया देयर आर इलेक्ट्रॉन, देयर आर प्रोटॉन, ओके, proton are concentrated at the nucleus at the center. Rutherford model had a fatal mathematical flaw. What was that? Like in case of helium, a helium atom has 2 protons, therefore it should have an atomic mass exactly 2 AMU, 2 atomic mass unit, but actually measurement proved helium weight was 4 MU. So where is the missing mass coming from if it has no electric charge? तो ये बचा हुआ मास किसका था, 2 प्रोटॉन थे तो उसका मास हो गया 2 AMU। तो 4 मास कहाँ से है, सो लेट्स सी हाउ इट, वेयर वाज इट, अनकवरिंग द घोस्ट पार्टिकल। घोस्ट पार्टिकल क्यों, कि अभी तक हमें पता नहीं है कि व्हाट इज दैट पार्टिकल। सो इन 1932 जेम्स चैडविक ही है जिन्होंने न्यूट्रॉन का पता लगाया था, और यू कैन से ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ही bombarded a thin sheet of beryllium with alpha particle. Again he used alpha particle positive charge, highly penetrating rays were emitted from the metal. Okay, तो जब ये मेटल पे टकराया तो आगे जो है उसको पेनिट्रेट करते हुए तो वहां से एक रे इमिट की। दीज रेज, वहां से रेज एमिट की, दीज रेज वर completely unaffected by electric और magnetic field। जो ये रेज यहाँ पे मेटल शीट से निकली है, these rays were unaffected by electric और magnetic field। इसका मतलब क्या है, there is no charge on these rays। ओके, ये रेस किसकी थी, डिस्कवर्ड द न्यूटन, दिस रेस वाज ऑफ न्यूटन, अ न्यूट्रल पार्टिकल विद मास ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू प्रोटॉन। ये रेस थी न्यूटन पार्टिकल की रेस थी जिन पे कोई चार्ज नहीं था और जिनका मास था प्रोटॉन के ही बराबर। building the complete atom, with Chadwick discovery the puzzle is complete। Matter is not a solid sphere, it is a dynamic engine of 3 subatomic particles, the core, pack of heavy proton and neutron into the dense core, the force lock them together with strong nuclear force, the orbit set the nearly weightless electrons into high speed orbit to balance the charge of proton। Coming to next, तो अभी तक हमें पता चल चुका है देयर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। बट हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब क्वांटिटी में हमें नहीं पता, नंबर्स में नहीं पता, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। सो
यहाँ से कंसेप्ट आया चार्ज टू मास रेशो. हाउ इज इट फाउंड? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी इट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ. जब एक चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड से गुजारोगे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, तो ये जो है बैंड करेगा एक सर्कुलर पाथ पे. एज यू कैन सी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे बैंड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के कारण. ओके अब ये जब सर्कुलर पाथ पे बैंड होगी तो कुछ उसका रेडियस भी होगा. Okay, so we have an equation, this EVB mv square. What is B here? B is the magnetic field. Okay, from this equation we come to know E to M, E ratio to M is equal to V over BR. What is B? V is the speed of electron. We know it. What is the speed of electron? Because we are firing electron. B is the magnetic field, we are applying magnetic field, so we obviously we know its value. R is the radius of circular path, we can measure it. So from these three values we can find the ratio of E and M, charge over mass. Okay, so from Thomson result, by putting the value of M, V and R, we got the ratio of E ratio M, it was 1.7588 into 10 is to power 11 coulombs per kilogram. Then we have to find now charge of electron. Then Millikan oil drop experiment was done. Tiny oil drops are placed between two plates. A voltage is applied to create electric field. When the drop is stationary means they are not moving, energy will be potential energy mg. Okay, so electric force is equal to mg. Q is equal to mg. What is q here? Q here is charge on the drop. We have to find this. E is the electric field we applied, we know its value. M is the mass of drop, we know the mass of drop because we are using this. G is the acceleration due to gravity, we know its value 9.8 meter per second square. So from this equation, electric field, by putting the electric field, and electric field is equal to potential difference between the plate, distance between the plates, and by adding the value, so charge of the drop is equal to mg over E. So from this we come to know the charge on oil drop, or you can say charge of one electron is 1.602 into 10 is to power minus 19 coulombs. तो अब हमें चार्ज मास रेशो पता चल गया है, हमें चार्ज भी पता चल गया. चार्ज मास रेशो में जब हमें चार्ज पता चल गया है, then we can easily find the mass of electron by putting the value of E. Okay, so this is the value of E, charge on one electron. This is the charge mass ratio, and from this we come to know the mass of electron is 9.109 into 10 is to power minus 31 kilogram. So this is charge mass ratio, this is the charge on one electron, this is the mass of one electron. So we have a table here, you can see these are the symbol. This is the charge on one electron, this is the charge on proton, and you know neutron is neutral. This is the mass of electron. Okay, we are taking it almost zero, because if you compare the mass of electron with the mass of proton, neutron, or mass of atom, it is almost zero, negligible. And mass of proton is this 1 AMU, mass of neutron is also 1 AMU, and these are the location. Where is electron? Topic isotopes and isobars. What are isotopes? Isotopes are the elements having same atomic number. Like you can see here, these are the three elements of hydrogen, and protium, deuterium, and tritium. Why they have different name? Their atomic number is same. The number of proton is same. That is 1, 1, 1, but their atomic mass are different because of different number of neutron present there. In protium there is no neutron, so the total atomic mass is 1. In deuterium there is one proton and 1 neutron, so atomic mass is 2 AMU. And tritium, 1 proton and 2 neutron. So these are isotope of hydrogen. Isotope have same electronic configuration but different mass. Why same electronic configuration? Because we know in an atom number of electron is equal to number of protons. So number of proton in these three atoms are same. It means electrons are same. What are isobars? Come to this as well. Atoms of different elements. Remember, atom of different elements. In isotope, atom was from same elements. Atom of different element which have the same mass number, their mass number is same but atomic numbers are different. Like
Argon atomic mass is 40, atomic number is 18. Calcium atomic mass is 40, atomic number 20. And scandium, these three are isobar for each other because their atomic mass is same 40, but the atomic number is different. Isobar have different electronic configuration because the number of proton is different, so obviously number of electron will also be different. Coming to next topic, electromagnetic radiation. What are EM waves? So electromagnetic radiation is a form of energy that travels through a space as waves. Okay, it consists of alternating electric and magnetic field produced by an accelerating charge particle. जब भी एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो अपने परपेंडिकुलर, अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वही जो उसको ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे. एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, direction of propagation, the electric and magnetic field, you also can see electric and magnetic field are perpendicular to each other and to the direction of propagation as well. Unlike sound or water waves, EM waves need no medium. They can travel in vacuum as well. All EM radiation travel at the same speed in vacuum, and that is the speed of light, 3 lakh km per second. So one family of waves, the electromagnetic spectrum, you can see here. As we go toward left side, the wavelength increase, and frequency decrease. As we go to the right side, wavelength decrease and frequency increase. Or you can basic term of electromagnetic radiation. First is wavelength. What is wavelength? Distance between two successive wave crests. You can see here this distance is wavelength, and the symbol of wavelength is lambda. Okay, and its unit is obviously meter, standard SI unit of length. Speed of light, that is c, and you know its value is constant, 3 into 10 is to power 8 meter per second, and c is equal to lambda nu. So what is nu? Nu is the frequency, and it is equal to c over lambda. So what is frequency? Number of waves passing a point per second, and its unit is hertz. And next is, what is wave number? Wave number is the number of wavelength पर यूनिट डिस्टेंस. एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितनी वेवलेंथ है, दैट इज वेव नंबर. नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अ मिस्ट्री दैट ब्रोक क्लासिकल फिजिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Black body radiation, how hot objects emit light. When we heat some object, it's emit radiation. Okay, so that is called black body. When we heat an iron rod in a furnace, it become first dull red, then bright red, then white, then blue as temperature rises. Plot intensity versus wavelength. The curve peaks at a certain wavelength. As the temperature increase, the peak shift toward shorter wavelength. You can see here, as the wavelength is increasing, first it will reach up to peak and then it will decrease. So a curve body couldn't predict using classical wave theory. जो classical wave theory है वो क्या कहती है? Physicists predicted that a black body should radiate more and more intensity as wavelengths get shorter. जैसे जैसे wavelength short होगी, wavelength या इस तरफ short हो रही है ना, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि वो इनफाइनाइट भी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. जैसे जैसे पीक पे आने के बाद वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो ये डिक्रीज हो रही है. तो ये जो है, दिस अब्सर्ड रिजल्ट वाज निकनेम्ड अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी. व्हाट इज red black bodies obviously don't emit infinite energy. The prediction was clearly wrong. Something fundamental about the how energy works at the atomic scale was missing from classical physics. This is the exact track the Planck was about to fix, leading to birth quantum physics. So this is the first step toward quantum physics. So here comes Planck quantum theory. So Max Planck in 1900, he proposed energy is emitted or absorbed in a small discrete packets. So it means energy is not continuous, it comes in packet, and the packet is called quantum. So packet is called quantum. Energy of one quantum is equal to h nu. What is h here? H is Planck's constant, its value is given here. So possible energy of any packet can be either 0 or h nu or 2h nu or 3h nu. So
you can easily understand by this, like you are going on a stairs, so either you can on step 1 or can step 2 or on step 3, you cannot in between in the air. So photon, what is photon? A quantum of electromagnetic radiation is called photon, as told by Einstein. Energy is equal to h nu, c is equal to lambda nu. Here we can write E is equal to energy is equal to hc over lambda. So we know the value of h, we know the value of c. Okay, so by putting this we can find the energy easily. Higher frequency, higher photon energy. Shorter wavelength, higher photon energy. Photoelectric effect come to when suitable radiation falls on a certain metal, electrons are ejected. What is meaning of suitable energy? The energy which is minimum required to eject the electron from the metal surface. So that is called suitable energy. If that energy is not enough, the photon will not able to remove the electron, to eject the electron. The phenomena is called photoelectric effect, first observed by Hertz. Einstein explanation of a photoelectric effect. Einstein used Planck's quantum theory. Light behaves as a stream of particles called photons. So he gave them the, so Einstein gave the name this packets photon. So energy of photon is equal to h nu. Part of energy is used to remove electron. This minimum required energy is called work function, or you can say phi. W naught, you can say W naught is equal to h nu naught. So you can see here photons are coming on atom and electrons are ejecting from the photon by using the energy of photon. They will eject with some kinetic energy, and this kinetic energy will be equal to h nu minus W naught. What does it mean? W naught is the energy required to eject the electron, and h nu is the total energy of photon falling there. So kinetic energy is equal to this. So from this we come to know a result, intensity versus frequency, very important. So what does it mean? So more photon means more electron emitted. One photon can remove one electron. So more photon can remove more electron, but kinetic energy does not increase. Kinetic energy depends upon what? Kinetic energy depends upon the frequency of photon. Energy of each photon increase. As the energy of each photon increase, kinetic energy of photoelectrons also increases. So as the intensity increase, the number of electron increase. As the frequency of one photon is increase, kinetic energy of electron increase. Experimental observation of photoelectric effect. Observation 1. Electron are emitted immediately, no significant time lag. Observation 2. Number of emitted electron depend upon the intensity of light. कितने ज्यादा फोटोन वहां पे पड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसी पे डिपेंड करेगा. ऑब्जर्वेशन 3. ईच मेटल हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो हर किसी इलेक्ट्रॉन की, हर एक मेटल की अपनी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है कि उससे कम पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. तो फोटोन को कम से कम उतनी फ्रिक्वेंसी तो हमें देनी ही पड़ेगी. इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, उसकी फ्रिक्वेंसी मैटर करती है. इंटेंसिटी किस लिए मैटर करती है? इंटेंसिटी मैटर करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा अगर उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है. तो कमिंग टू नेक्स्ट, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. We know that light has wave nature because it can easily explain interference and diffraction. So you can see this is interference, diffraction. We will study about this later, and it has particle behavior as well. We get to know from this black body radiation and photoelectric effect. So light has wave particle duality. This is all for this part. Rest of the topic will be covered in the next part. If this video is useful for you, like, subscribe and share with your friend. See you in the next video.